So, hello all. My name is Krish, and welcome to my YouTube channel. Today we have with us Tavishi, and probably after many days, I'm making this kind of transition stories videos specifically with people who have made transition. So, Tavishi, welcome. Uh, Definitely, there'll be a lot of things to have a discussion in this podcast. But first of all, congratulations. You made some Thank you. terrific transition. We'll understand about that entire story. Before we go ahead, first of all, how are you feeling right now? I'm at the seventh heaven. And because the reason is I'm having so many jobs in my hand in this recession time period. So obviously I must be feeling so good. People are looking for even one job. And I have so many jobs in my hand. Okay, perfect. So, Tavishi, before we go ahead, just give a brief intro about yourself, what your education background is, and why data science for the first time, like first instance. Okay. So, hello everyone. My name is Tavishi. I'm from New Delhi, India. I've done BTech in computer science in 2014, but I was not able to joined as a software engineer or any other department because I wanted to become a fighter pilot. So that time I tried for that, but because of the medical reasons, I was not able to make it possible. So in 2015, I got an opportunity. Like there was a mass hiring. I will not say, I will not lie. There was a mass hiring going on in Snapdeal. So I joined Snapdeal as a onboard specialist because I was not a fresher and there was a gap of 8 9 months, so I was not able to join any company as a software engineer. I tried also, but I could not make it possible. And there was a fear also कि मेरे सब दोस्त ने already join कर लिया है. Now what, there are very less options for me. Then later on, when I was working over there, then I realized like I am not meant for this thing. Like onboard specialist, they are just calling and they are asking people, okay, can you give us the details and all. So this was not me. So that time I was working on the MySQL also. So that time I've made up my mind why not to change the field. So in 2015 November, I got a chance in Polygon Fabrics to join as a analyst, data analyst. So there, my career has been started. So later on, when I was working there, my job was my work was stagnant over there. My growth was stagnant over there. So that time, like it was since data science was not at peak, people were just normally there were only one or two videos were coming over there or one or two news were coming over there. Just say aaj har din, if you are just going on internet, okay, now there is this transition in data science, new things are coming. So बहुत सारी चीजें उस टाइम नहीं थी. So I started. So luckily in my company, they were actually going into this data science field. They were hiring people for that. So that time uh, I hardly worked for 2 3 months on machine learning things. So I made inside transition. And Okay, later nothing on, much. yeah, so later on when I was working over there, obviously I was facing difficulties and all, but I was like still मैं handle कर पा रही थी चीजें, still I can do that. But later on when I was going uh, forward, then the point came like, okay, I'm good with machine learning, then why not to go to the other field? Like I want to be a part of the computer vision or any other thing. But when I was giving interview that time, I was actually facing difficulty because just working on normally machine learning algorithms and answering the question to the interviewer is totally different thing. Because आपको ये पता है कि एल्गोरिथम में ओके फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट स्टेप, डेटा प्री प्रोसेसिंग इज द फर्स्ट स्टेप, साइकिल लर्न लाइब्रेरी इज देयर टू हेल्प यू, ओके दिस इज द फर्स्ट स्टेप, देन गो फॉर द सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप. सो दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग. और answering questions is totally a different thing. So that time I was facing difficulties. So I have joined iNeuron also for the same. And there I got to know that when you were discussing about your channel, okay, just go and watch videos over there. Then I started watching your videos for uh, for every single thing. Like even if for a small thing, I always search. Like this is my day to day part. Like okay, I just want to search for this boosting Krish Naik video, deep learning, any topic Krish Naik videos. So because of you, Krish Naik, I have made good transition, and yes, I'm able to.
You're really modest, obviously. It's really your hard work, So we can only guide you, we can only teach you, but at the end of the day, it's all your hard work. So definitely take the credit for yourself. Just don't keep it for me. I never Okay, gave let's. up. Yeah, anyway, perfect. So Tavisi, let's go with the next question. So what do you think? Like, how was your preparation strategy? Every time probably you felt some kind of difficulty. This will definitely help people right now who are preparing for data science. So what do you think? Like, how was your preparation strategy? Like, when you faced any difficulty, how did you solve that? Okay. First of all, when I was learning things, so I was not able to follow one path because in data science, there are so many things, so many things. And to line up things is a basic because nowadays, if new things are coming, and if you are not good with your basics, then you will not be able to reach at heights. This is True. for sure. So Hmm. I actually gave my most of the time to clear my basic parts. So for that, you need to start from very basic, very, very, very basic. Like Python ka pehla topic, what is string? Statistics ka, what is statistics? Then go forward. Okay, what are the other type of like different type of statistics? Why inferential statistics we are using? Why descriptive statistics we are using? So I took actually step by step. Before that I was just jumping. अच्छा ठीक है आज मशीन लर्निंग में दूसरा एल्गोरिथम करना है, आज डीप लर्निंग में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है, बट उससे पहले आई वाज नॉट इवन अवेयर अबाउट द क्लासिफिकेशन कैसे होता है. सो दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स आई हैव मेड. देन लेटर ऑन आई actually made a strategies. Okay, I will show you something. I have a notebooks like this. So actually, this Nice. was suggested by one of my friend. Why you are just writing in a like? Okay, I will show you these things because sometime it happens like you already have a study material, but you want to write something. So that's why I took like I chose these kind of strategies. So I have these 4 5 notebooks with me. Okay, this you can call it as your holy Bible, Holy for Bible, cracking. actually. Yeah. So when actually I was using register before that, like pages Mm, normal. So that mm, time what I faced when I was reading new things or when I was revising things, so new things are coming up. वो सब कुछ ऐसे 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 मिक्सअप हो जाता है तो आप नहीं कर पाते हो. एंड वट आई फील इज कि अगर आप कहीं से वीडियो देखते हो और आपको वो चीज समझ आ जाती है एंड समबडी इज गिविंग यू अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ओवर देयर, always get a printout. Always get a printout और उसको अपनी नोटबुक में लगाओ बिकॉज जब दोबारा उसको रिवाइज करेंगे ना तो यू विल फिगर आउट कि हाँ ये तो मुझे आता है. नाउ कृष्णा, मैंने आपकी वीडियोस इतनी बार देखी है, इतनी बार देखी है कि आई कैन टेल यू कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, कहाँ आपने क्या बोला है, कहाँ किस चीज का एग्जाम्पल दिया है. आपने एक एस पी एम, आई डेफिनेटली आई विल टेल यू एवरी वन अबाउट दिस. कृष्ण नायक ने एक एसपीएम की वीडियो में बोला है कि अमेजोन के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सी एंड ईटा वी आर यूजिंग. सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू मी इन डाटामैटिक एंड okay. द इंटरव्यूअर वाज इम्प्रेस्ड लाइक आई नो दिस थिंग. सो आपने अपनी वीडियोस में इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें की है ना, कहीं और से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं से भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है. एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग यू राइट नाउ, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस. Thank you, Tavishi. Thank you. Tavishi, like, how was your interview process? Probably tell in a little bit detailed manner so that people will be able to understand like how many rounds you had in the first round, क्या पूछा, in the second round क्या पूछा, ऐसे टाइप में. और आई होप आप ये भी बता सके आपके पास अभी करंटली कितने ऑफर्स हैं. बताना चाहे if you're comfortable with that. Yes. I have more than 6 7 offers right now and Wow. yeah. और इंटरव्यू में सबसे पहला राउंड मेरा जो मोस्टली हुआ है दैट इज दे गिवन मी द असाइनमेंट. Like they are giving me the random assignments, they are giving their data and they are saying make a machine learning model, come up with Mm, the idea, come up with the end-to-end project. So they gave me only 2 days of time, and in those 2 days, why companies are actually approaching this, because if you are already experienced and if you are just going, okay, if you are a fresher also, then you must be having idea about क्या होता है क्या नहीं होता है मशीन लर्निंग में. यू कैन नॉट मेक फूल टू कंपनीज. सो दे आर mm. जस्ट टेस्टिंग यू. उसमें अगर 50 लोगों ने अप्लाई किया है तो ओनली मुझे लगता है 5 से 7 लोग ही आपको असाइनमेंट दिलवाते हैं. तो
वहीं पे आप लोग आपका ऑलरेडी आधा सिलेक्शन हो जाता है. देन लेटर ऑन दे मोस्टली टॉक अबाउट व्हाट यू हैव डन इन योर असाइनमेंट, what Mm, projects you have done, what strategies you have made. And like in machine learning, people mostly asking about, okay, why, if there is a imbalanced data, then how you will handle that, why there is a, mm, like, how, what is the possibility of leakage of a data, how you will find out why there is a leakage of a data and there is a overfitting, how will you distinguish between these two things. So इस टाइप के क्वेश्चंस सब 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 पूछते हैं कि व्हाई. ओके, द मेन जो फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग इट लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन, व्हाई इन linear regression we have a three metrics or four metrics, MAE, MSE, RMSE. Why? In class, I have explained everything, I guess, right, Yes, about all the things. you have explained every single thing. Why decision tree is not performing well? Why always overfitting? Okay, एक और स्ट्रेटजी मैं आपको बताना चाहूंगी. अगर आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स वन बाय वन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका बेस लीनियर रिग्रेशन के साथ अच्छा है, तो आई एम टेलिंग यू, आपको किसी भी एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. सेकेंड थिंग, दूसरे एल्गोरिथम से जाने से पहले ऑलवेज ऑलवेज लुक वाई दिस एल्गोरिथम. अगर हमने पहले Mm, वाला एल्गोरिथम इन्वेंट किया है, तो ये एल्गोरिथम की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट वाज द mm, ड्रॉबैक्स mm. ओवर देयर. सो इफ यू विल गो विद दिस स्ट्रेटेजी ना, वाई वहां पे वो क्यों नहीं किया, ऑलरेडी वो है वहां पे लीनियर रिग्रेशन के लिए, तो और डिसीजन ट्री क्यों, वाई KNN. सो अगर आप इस चीज के साथ, इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली यू विल मेक इट पॉसिबल. लास्ट में जाते जाते आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा कि आप आंसर ना कर पाओ. Very nice, yeah. So motivating, right? And you're right, right? If you probably anybody who follows this strategy where they focus on understanding why and probably at the end of the day know how to implement end to end, I think that will be more than sufficient to clear any interview. I hope I'm right, right? Yes, and end to end जो आपने एक्सप्लेन किया है, देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑफ 7, लाइक यू स्टार्टेड फॉर द 7 7 डेज, देन days. उसको आपने थोड़ा स्ट्रेच किया, 12-13 डेज में किया है. बिलीव मी गाइस, इफ यू वांट टू जस्ट लर्न एंड टू एंड, जस्ट वॉच दैट. बी पेशेंट, नहीं समझ आए उस वीडियो को बार-बार देखो. कुछ क्या होता है, पहली बार में व्हेन आई स्टार्टेड विद द ट्रांसफॉर्मर में, मुझे पहली बार में आपका वीडियो पूरा अच्छे से नहीं समझ आया था. सुधांशु ने भी एक्सप्लेन किया. देन आई वाज लाइक कि मेरे को नहीं करना. मैंने दोबारा उठाया तो मुझे ऑलरेडी 20% आता था, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी समझ चुकी हूँ कि हाँ, आपने क्या बोला है क्या नहीं. तो ऐसे ही मैंने जब 3 से 4 बार वीडियो देखा, आई कैन एक्सप्लेन यू इवन राइट नाउ व्हाट इज द, लाइक, हाउ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स. सो Very नेवर nice. गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप. एक बार नहीं समझ आता, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, हो जाएगा. 100% हो Great. जाएगा. Great, great, great. और आप बताना चाहेंगे कि what was the maximum hike that you got from one company? Any of the company? Maximum hike. नाम मत लीजिए मैक्सिमम कंपनी का, बट मैक्सिमम हाइक के बारे में बोलिए. maximite, like, I'm getting like 170, more than 170% also. And My God. one, like, normal hike is 70 to 80%. Normal hike is 70 to Yeah, 80%. that is the And standard, I guess. More than 50% in data science industry, you'll be easily be able to get it. But I'm 170 actually is paying, freaking very and big I'm number. actually playing with 170. the companies also. Like, I have offers, then why not to check my caliber, where I'm standing, where, what I can do, and if I'm lacking somewhere, then what are the required things. So that's why I'm also giving more interviews now. So I'm about to join within 2 days. But yeah, still I was giving interviews even after getting the offer letters, because But it now I goes. think you have finalized the company, right? Which company Yes, you're I have probably joining. finalized the company. I have finalized. Would you like to name the company? Like, if Yeah, you're fine with that? Johnson's Control India. So I'm Very nice. joining software engineer, data scientist over there. Very nice, very nice. And let's talk about what do you think was like probably just talk about a timeline, when you were ready to give the interview. So how much time did you specifically take probably after working so much hard? Because after seeing your notes and things, I can say that you have spent a good amount of time. So what was the timeline that you can probably take? And for any other people, if they really want to make a switch into data science, what do you think the timeline is? Every day, how much hours they need to invest in this? अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने 13-13, 14-14 घंटे भी पढ़ाई की। Okay. 15-15 आवर्स भी पढ़ाई की है, क्योंकि डेटा साइंस में एक चीज़ नहीं है जो आपको सीखनी है। Mm, mm, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर आप नॉर्मली अपना टाइम लेना चाहें, तो
6 to 7 months, Hmm. like for learning complete end-to-end models. एंड Hmm. उस बीच में कंसिस्टेंसी होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इफ यू आर जस्ट रीडिंग टुडे एंड यू आर टेकिंग अ गैप ऑफ 4 5 days, इट विल नॉट वर्क. इट विल नॉट वर्क. आपको उतना ही दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, उतना ही आपको वापस से वीडियोस जाके देखने पड़ेंगे कि उस वीडियो में क्या था, वापस से रिकॉल करना पड़ेगा. एंड मैंने फेब्रुवरी में जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया था. एक्टिवली आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब. तो इस टाइम रिसेशन है, तो मैंने Naukri.com का प्रीमियम भी लिया. तो उसमें मेरा गलती क्या हुआ, आई टुक दिस रेज्यूमे बिल्डिंग ऑल्सो, सो आई वॉज नॉट अवेयर कि मेरी दूसरी सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है. तो 1 महीना पे मुझे कॉल्स ही नहीं आ रहे थे, मुझे कॉल्स ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि इस टाइम रिसेशन टाइम पीरियड चल रहा है. मैंने प्रीमियम लिया, उसके बाद मेरे पास कॉल्स आना शुरू हुए. बिलीव मी गाइस, आपको इतने सारे कॉल्स आएंगे, अगर आपको 15 कॉल्स आ रहे हैं तो उसमें से 3 या 4 इंटरव्यू होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे. और उन 3 4 में से भी आप 1 या 2 में फर्स्ट स्टेप क्लियर कर पाएंगे, सब में नहीं कर पाएंगे. लेकिन आपको वो स्टेप क्लियर करने के बाद जो इंटरव्यू देना होता है ना, मतलब जो एक्चुअल चीज स्टार्ट होती है, वो आपने अभी तक क्या पढ़ा है, बेसिक क्या है क्या नहीं है, सब कुछ उस पर डिपेंड करती है. एंड बिलीव मी, कोई तुमसे ये नहीं पूछता तुमने ये वाला कोड क्यों यूज किया है, तुमने दूसरे वाला कोड क्यों नहीं यूज किया है. दे विल जस्ट आस्क अबाउट योर बेसिक कंसेप्ट, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट. Like what is standardization, what is normalization, in what cases we are using standardization, and in what we are using normalization. इतनी छोटी छोटी चीजें. What is central limit theorem? Okay, give a normal example of the, like, day to day life example of the central limit theorem. So these small questions they asked. इतना कुछ बड़ा नहीं है, इतना कुछ भी बड़ा नहीं है, बस हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है. अगर हम ए से बी जाएंगे तो दैट इज बेटर, रादर देन ए, देन वी आर गोइंग टू बी, देन वी आर अगेन कमिंग बैक टू सी. तो अगर ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा. हो पाएगा Yes. पर बहुत टाइम लगेगा. आप जो जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? मैं सारा वीडियोस बना चुका हूँ सारे चीजों के बारे में. एक्चुअली एक एक वीडियो. वही हर एक टॉपिक है, जैसे आप बोले स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन कब क्यों यूज करते हैं, क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ सारा चीज. वेरी नाइस कि जो मेरा पढ़ाने का टेक्निक है लाइक फॉलो कर रहा है इंटरव्यू स्टैंडर्ड्स के लिए, इंटरव्यू बहुत स्टैंडर्ड्स अच्छा के लिए. कर रहा है. Like I told you, na, I joined iNeuron also. In that one, I know the date also. 16th of April को you started the statistics का playlist, and there are 4 videos of that. अगर किसी ने वो वीडियोस नॉर्मली देख लिया, नॉर्मली, क्योंकि आपने वहां पे पी टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, इतने सारे एग्जाम्पल्स करवाए ना, इतने सारे एग्जाम्पल्स करवाए, कोई भी नहीं फेल करेगा, कोई भी नहीं फेल करेगा. कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो उसको 100% सॉल्व करेगा. तो आप एफएसडीएस नवंबर 21 बैच के थे, राइट? आई होप ओके. तो यस, अप्रैल में ही हम लोग वो स्टार्ट किए थे रिगार्डिंग स्टैट्स एंड ऑल. उसके बाद हम यस, लोग ने यस. मशीन लर्निंग किया. नहीं नहीं, आई रिमेंबर दैट. आई हैव ऑल द नोट्स केप्ट विथ मी. सो आई यूजुअली कीप ऑल द नोट्स दैट आर अवेलेबल. ओके, परफेक्ट. ताविशी, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ. अब देखिए, बाकी लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे, लाइक इन शॉर्ट, लाइक अगर तैयारी कर रहे हैं, थोड़े लोग क्या होता है कि देखिए आपने बहुत सारा मेहनत किया, राइट? आपको भी पता है कभी कभी गिव अप करने का ये भी आ जाता है मन में, ठीक है, आई आई नीड टू गिव अप नाउ यार, दिस इज मोर देन इनफ. कभी कभी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, जब कॉल्स नहीं आते हैं वहां भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बहुत सारे लोग. तो उनको क्या सलाह देना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, विथ रिस्पेक्ट टू कीपिंग दैट पर्टिकुलर मेंटल स्टेट गोइंग ऑन? कभी कभी देखिए आप जैसे बोल रहे हैं, राइट, इफ यू स्किप इट फॉर 1 or 2 days देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, कि आपको फिर से और एफर्ट डालना पड़ता है. ऐसे सिनेरियो बहुत सारे लोगों के साथ आता है. सो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन? आई विल से ओनली वन थिंग. अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो किसी चीज के लिए, द हम्म. फर्स्ट थिंग इज कीप नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल थिंग. एवरी सिंगल थिंग आपको जहां से जो समझ आ रहा है, बिकॉज 1000 वीडियोज अवेलेबल हैं. हम्म. और कौन सी वीडियो से आपको क्या समझ आए, क्या चीज क्लिक कर जाए, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. उसके नोट्स लो, उसको पढ़ो. और हर टॉपिक को खत्म करने के बाद ना, ऑलवेज सर्च फॉर questions on this topic, statistics. You will get 3 4 websites, good websites, where you can get more than 100 questions, 75 questions. उसको अपनी नोटबुक में ऐड करो. एक पॉइंट ऐसा आएगा, मैंने जब पहला इंटरव्यू दिया था, मैंने डेट मांगा कि मुझे 1 हफ्ता चाहिए, बिकॉज मुझे सब कुछ रिवाइज करना था, सब कुछ रिवाइज करना था, कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती थी.
तो उस टाइम mm, मुझे 1 हफ्ता लगा सब कुछ रिवाइज़ करने में। देन लेटर ऑन मेरा टाइम रिड्यूस होता चला गया। लाइक mm, 4 डेज़, 3 डेज़, mm, 2 डेज़, 1 डेज़। डू नॉट लूज़ होप कि इसमें नहीं हुआ तो नेक्स्ट में नहीं होगा, इसमें नहीं हुआ तो mm. नेक्स्ट में नहीं होगा। डू नॉट थिंक कि मेरे साथ भी ये मोमेंट आया। आई फील लाइक आई एक्चुअली क्राइड इन फ्रंट ऑफ माय हस्बैंड कि मुझसे नहीं हो रहा है, मेरा नहीं होगा, ये है, वो है। सो इन चीज़ों से अपने आप को अफेक्ट मत होने दो। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, सिंपल। अगर ये सब चीजें हैं तो डेफिनेटली वन डे यू विल क्रैक दैट। एक दिन ऐसा आएगा कि आप सारे इंटरव्यूज क्रैक कर रहे हो, सारे इंटरव्यूज। Just like जस्ट yours right now. यस क्रिश, यू वोंट बिलीव, एक टाइम पे आई वाज एक्चुअली इन डिप्रेशन कि एक भी मैं इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पा रही हूँ, एक भी सिंगल इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पा रही हूँ, कहाँ लैग कर रही हूँ, कहाँ लैग कर रही हूँ। तो तब से मैंने ये स्ट्रैटेजीज, तब से ही मैंने नॉर्मल आपकी नोट्स रखती थी, लेकिन मैंने बाद में क्वेश्चन आंसर, आपका 30 डेज क्वेश्चन आंसर भी है वहां पे आई न्यूरॉन पे, और इसके अलावा ऑनलाइन मैंने सारे लिए। तो उनको पढ़ोगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपका आप नहीं आंसर कर पाओगे। मेरे पास जितनी नोटबुक्स हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था किसी ने ऐसा पूछा हो कि ये क्वेश्चन है और वो मेरी नोटबुक में नहीं है। मुझे पता है, मैंने ये पढ़ा हुआ है, इट इज ऑलवेज देयर। जस्ट मेक अ स्ट्रैटेजीज, मेक अ नोटबुक्स, रीड अगैन एंड अगैन, रीड अगैन एंड अगैन, डू नॉट गिव अप, और इंटरव्यूज के लिए कॉल करो एंड फॉलो बैक करो। अगर आपको कोई कंपनी कॉल कर रही है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को कॉल कर रही है, उनको कुछ मतलब नहीं है कि अगर आप नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वो आपको वापस से कॉल करें। तो आप उनको कॉल करो, बार बार कॉल करो, ओके इज लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, मेल करो। तो ऐसे डेफिनेटली यू विल गेट जॉब। दिस इज व्हाट माय Okay, स्ट्रेटजी वाज perfect, एंड दिस इज हाउ आई मेड इट पॉसिबल। क्योंकि पहला perfect, जॉब मुझे Tavishi. ऐसे ही मिला था, आई वाज जस्ट रनिंग बिहाइंड कंपनी की ओके आपने मेरा असाइनमेंट लिया, आपने वापस से कॉल नहीं किया, दिस इज नॉट द राइट वे, आई वाज वर्किंग आल्सो एंड मैंने आपका असाइनमेंट भी कंप्लीट किया। देन दे वर इन अ गिल्ट, तो उन्होंने वापस कॉल किया, पूरा इंटरव्यू लिया, सब कुछ हुआ और हो गया। अगर मैं कॉल नहीं करती तो शायद मेरा पहला इंटरव्यू नहीं क्रैक होता। Very nice, very nice. So, Tavishi, that's so amazing. Again, congratulations. Uh, I'm really feeling proud, when I hear this kind of transition stories, and obviously after putting a lot of effort, it really makes me feel that okay, I need to prepare more better, probably to teach you all, so that if there are some serious candidates, right, they definitely will be able to clear it. So, Krish, you are doing so well क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, they cannot afford very very like heavy amount of courses. So you are doing too good even with iNeuron also, and you're just charging 20,000, or like if you have a discount coupon also very less, and you are giving 4 hours of session. My God, this is too good. Salute to you for this, and yeah, keep working like this. You're just 2 years elder than me, but still you are guru for me because you're just giving me a right direction. Okay, what next? What next? What next? You're like whenever your videos come, I always watch that. And please work hard like this, and please motivate us, and please keep updated, like and sure. update us. Sure. Definitely. Updating part, don't worry. Anything new will be coming. I'll be sharing those kind of information with you all. So, Tavishi, thank you once again. So, guys, I will be providing Tavishi LinkedIn ID. I hope I can provide you information if someone wants to probably communicate, ask you regarding your preparation strategy. Is it fine? We can put your Yeah, yeah, LinkedIn ID in the done, done, description. done. Yeah. Description. But at the end of the day, see, like how I have guided you, you can guide someone, who cannot probably invest so I'm much of. guiding. I'm Oh, you guiding already people. started. I'm bluntly saying that अगर कुछ करना है तो follow कृष्णा एक, blindly follow कृष्णा एक, कहीं इधर उधर मत जाओ। Okay, I always encourage people कि अगर तुम्हें हिंदी में समझ आता है, don't feel it कि नहीं यार ये तो हिंदी में है, मैं कैसे देख सकता हूँ। Don't feel it like this. At the end you have to get a job. And Yeah. ठीक है, at the end we have to give interview in English. So there are English videos also because there are Mm, sometimes we are all Indians. हमें स्टार्टिंग से mm, चीजें नहीं समझ आती है कि ओके अगर ये सब इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो हिंदी वीडियोस आर ऑलरेडी देयर। आप डबल डबल मेहनत कर रहे हैं एंड उससे सीरियसली लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। जब मैंने आपका yeah. मशीन लर्निंग का हिंदी प्लेलिस्ट देखा था, मेरे सब डाउट्स क्लियर हो गए थे, सब डाउट्स क्लियर हो गए थे। एंड यस आई कैन से दैट आई कैन क्रैक एनी मशीन लर्निंग इंटरव्यू That is so बिकॉज kind ऑफ of यू। you, ma'am. Great. Thank you, ma'am. Thank you. So, guys, this was it. I really wanted to keep it till 20 to 24 minutes. But again, any queries that you specifically have, आपको कोई भी डाउट्स हो, आप डेफिनेटली ताविशी मैम को कांटेक्ट करिए थ्रू लिंक्डइन। सारा गाइडेंस आपको स्पेसिफिकली मिल जाएगा. So, thank you, Tavishi ma'am, for coming to this specific podcast, guiding all the students. Really, really happy for you. I hope you do really well, and always we are there anytime, any kind of queries, anything as such, any help in the future.
also will be there to help you out. Yeah, yeah. Sure. Please make videos on LLM and so Yeah, yeah, generative started. AI and all. We are eagerly waiting for your videos. I know it is very hectic to make videos, but please try to do Sure, that. man. I'm trying my level best. Whatever is possible from my side, definitely I will be doing that. Till the end, whatever my life is till that end, I will keep on promoting AI. Because I know the importance of it, and it can help many companies, many people, and all. Right. So thank you, Tavishi ma'am. This was it from our side, guys. I hope you like this particular video. We'll all see you in the next video. Thank you. Take care. Bye bye. Yeah, bye bye.